Assalamualaikum everyone, my name is Hassan Slim and I am your computer course instructor for grade 7. Today we are going to start our unit number 4, that is multimedia presentations. And the first topic is introduction to multimedia presentation. Multimedia presentation help user to present information visually in an interactive way. मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यूज़र्स को इस तरह से हेल्प करता है कि वो यूज़र जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक विजुअली एक इंटरेक्टिव और इफेक्टिव वे के अंदर प्रेजेंट कर सके. दे कैन यूज़ डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स इन देयर प्रेजेंटेशन टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन एन ऑडियंस. यूज़र जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स मीडिया एलिमेंट्स यूज़ कर सकता है ताकि उसकी जो ऑडियंस है उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, उनके ऊपर एक अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसकी अफेक्ट करे. मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ द मीडिया एलिमेंट्स. द एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस. मल्टीमीडिया बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मीडिया एलिमेंट्स को कंबाइन करके मल्टीमीडिया हम कहते हैं. उसके अंदर मल्टीमीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मीडिया एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं. मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के अंदर टेक्स्ट आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशंस आ जाती हैं. ग्राफिक्स क्या होते हैं? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सच एज ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग एंड चार्ट्स एक्सेट्रा ऑल कॉल्ड ग्राफिक्स. ग्राफिक्स बेसिकली डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती हैं नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, सच एज ड्राइंग्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग्स, चार्ट्स, इस तरह की और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर फ्लो चार्ट्स आ जाती हैं, हमारे पास शेप्स आ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं. इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं ग्राफिक्स. इनकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ग्राफिक्स. नेक्स्ट इज साउंड्स क्या होते हैं? अ वेव और वाइब्रेशन विच कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स इज़ नोन एज साउंड. फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ पासिंग कार, गन शॉट एंड अपलॉज एक्सेट्रा. साउंड बेसिकली क्या होता है? वेव होती है, वाइब्रेशन होती है जो कि एक ह्यूमन ईयर्स के थ्रू सुनी जाती है, उसको हम कहते हैं साउंड. नेक्स्ट इज टेक्स्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स डेट अ यूज़र टाइप्स विद अ कीबोर्ड. टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली कोई भी लेटर या नंबर या इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि एक यूज़र टाइप करता है कीबोर्ड के थ्रू, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज़ वीडियो. अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स दैट आर डिस्प्लेड वन आफ्टर अनदर अलॉन्ग विद साउंड इज़ नोन एज वीडियो. वीडियो क्या होती है? सीरीज ऑफ पिक्चर्स जो कि डिस्प्ले की जाती है एक के बाद एक के पीछे एक रख के जो पिक्चर्स डिस्प्ले होती हैं उसको हम कहते हैं वीडियो. अ वीडियो क्लिप इज़ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ अ वीडियो. फॉर एग्जाम्पल मूवी क्लिप्स एंड डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स एक्सेट्रा. वीडियो क्लिप क्या होता है? वीडियो क्लिप बेसिकली वीडियो का एक शॉर्ट सेगमेंट होता है या उसको हम कह लें कि एक शॉर्ट पार्ट होता है वीडियो क्लिप. फॉर एग्जांपल मूवी क्लिप्स एंड डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स जो कि एक छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं मूवी के अंदर से, उनको हम कहते हैं वीडियो क्लिप्स. एनिमेशंस इज अ टेक्निक यूज्ड टू क्रिएट मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल कार्टून, प्रोग्राम्स एंड एनिमेटेड मूवीज एक्सेट्रा. एनिमेशंस क्या होती हैं? एनिमेशंस बेसिकली एक टेक्निक होती है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट्स करवाती है. जैसे एक सिंपल पिक्चर है, उसके अंदर अगर हम एनिमेशंस इफेक्ट्स डालेंगे तो वो मूव करने लग जाएगी या चंक बाय चंक करके हमारे सामने शो होगी वो पिक्चर. इनकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कार्टून, प्रोग्राम्स एंड एनिमेटेड मूवीज एक्सेट्रा. So this is all about the multimedia. Multimedia has basically 5 types: animation, sounds, graphic, text, video. These are the main 5 types. There are much more. Creating a PowerPoint presentation. Microsoft PowerPoint is a software that helps a user to create attractive multimedia presentation using different media elements such as text, graphics, sound, video and animations. When you start PowerPoint, a new blank presentation begins automatically with one slide. Okay, creating a PowerPoint presentation. Basically PowerPoint, Microsoft PowerPoint जो है वो एक सॉफ्टवेयर है
जो कि यूज़र को हेल्प करता है एक अट्रैक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर, सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशंस। जब भी हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इस तरह की एक ब्लैंक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं बेसिकली स्लाइड। अब इसके अंदर उन्होंने सारी पावर पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर कि ये क्या ऑफिस बटन्स हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रिबन टू टैब्स हैं, ये यहाँ पे ग्रुप नेम है, टाइटल बार, हेल्प, दिस इज़ अ स्लाइड, दिस इज़ अ जूम स्लाइडर, व्यूज, स्टेटस बार, सबटाइटल प्लेस होल्डर, टाइटल प्लेस होल्डर, साइड पैनल, फर्स्ट स्लाइड, ribbons. To exit PowerPoint, click close button appearing in the top right hand corner. This is a close button. By clicking on this button, you can exit the PowerPoint. Next topic is multimedia presentation. An orderly display of information using different media elements such as audio, video, animation, text, and graphics is known as multimedia presentation. Next is multimedia presentation. What is multimedia presentation? An orderly display of information using different media elements such as audio, video, animation, text and graphics is known as multimedia presentation. मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होती है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली मीडिया एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और वो यूज़ करके हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उनको एक ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करते हैं। मीडिया एलिमेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं अभी? मीडिया एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वो आती हैं ऑडियो आ जाती है, वीडियो, एनिमेशंस, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये सारी चीज़ें मीडिया एलिमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। ये चीज़ें यूज़ करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। Multimedia presentation are used to present information to a group of people. It is the most comprehensive way to present information. PowerPoint and Adobe Flash are some examples of multimedia presentation software. Multimedia presentation basically present किसको की जाती है? एक group of people को present की जाती है multimedia presentation। ये सबसे comprehensive way होता है information को present करने का और सबसे effective way होता है। PowerPoint and Adobe Flash और सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ किए जाते हैं? एक पावरपॉइंट है और दूसरा है Adobe Flash। नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड एंड स्लाइड शो। अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन अ पावरपॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड। ऑल द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मीडिया एलिमेंट। Slide and slideshow. A single page of presentation created in PowerPoint is called slide. All the information in the form of media elements such as text, graphics and sound, etc. is presented on the slide. अच्छा, सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट के अंदर जो सिंगल पेज होता है प्रेजेंटेशन का, उसको हम कहते हैं स्लाइड। उसके अंदर जो सी भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मीडिया एलिमेंट्स की फॉर्म के अंदर होती है। मीडिया एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी स्लाइड्स क्रिएटेड इन पावरपॉइंट शोन वन आफ्टर अनदर इज नोन एज स्लाइड शो। In this slideshow, presentation is shown in the full screen mode. In this slideshow, all the graphics, timing, animated effects, and transition effects are shown. सारी स्लाइड्स की जो प्रेजेंटेशन शो की जाती है वो स्लाइड शो के अंदर शो की जाती है। अब पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी स्लाइड्स क्रिएट की जाती हैं वो जब एक के बाद एक शो की जाती है तो वो स्लाइड शो होता है, उसको हम स्लाइड शो कहते हैं। अब स्लाइड शो के अंदर प्रेजेंटेशन जो होती है वो फुल स्क्रीन मोड के अंदर होती है, कोई हाफ स्क्रीन नहीं शो होती है, उसको पूरी एंड टू एंड स्क्रीन के ऊपर शो होती है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शो होती हैं? उसके अंदर ग्राफिक्स आ जाते हैं, हमारे टाइमिंग्स, एनिमेटेड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस वगैरह, जो कुछ भी हमने उसके अंदर एंटर किया होता है, इंक्लूड किया होता है, इफेक्ट्स लगाए होते हैं, वो सारे उसके अंदर शो किए जाते हैं। ओपनिंग पावर पॉइंट। अब यहाँ से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी करेंगे, साथ साथ देखेंगे पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट यूज़ किस तरह करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, और ये साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी इंक्लूड होगा हमारे इस लेक्चर के अंदर। ओपनिंग पावर पॉइंट। क्लिक स्टार्ट बटन, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट
2007 opens। अब यहाँ पर 2007 है, ये पुराना एडिशन है। अब आजकल तो काफ़ी लेटेस्ट पावर पॉइंट आ गए हैं, तो हम थोड़ा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखना क्या है कि पावर पॉइंट को हमने ओपन कैसे करना है। गो टू दी start button. Now here it is PowerPoint. I'm going to click on it. Click on the PowerPoint opens. PowerPoint is open, blank presentation. Now here is our PowerPoint. What is the next step? Click on the title placeholder and type my first presentation. Now click on the subtitle placeholder and type your name, class and section. Okay, click on the title and add my first presentation and click on the, now here you can write your name and write your school name, and you can also write your roll number and age and class. Now the next step is click on a new slide button to add few more slides. Now click the slideshow button to run the slideshow of your presentation, or press F5 on the keyboard. The presentation will run in full screen mode. Save it in my documents folder with the name of my first presentation. Okay, now you can add some more slides. From here you can add as many slides as you want. Now you can write or you can just copy paste it. Okay, now I have created 4 slides and I have entered the name. Now I am going to start the slideshow. From here, right bottom of this is the button of, now I'm going to click on it and this slideshow will start. As you can see, the slideshow has been started. By pressing the escape button, we can exit from the slideshow. Now the next step is we have to save it in the my documents. Browse documents. The name of our file is my first presentation. We can save it here and the file is saved. Now the next topic is blank presentation. When a user starts PowerPoint, a new blank presentation begins automatically with one slide. If the user needs to start another blank presentation, follow these steps. Click Office button and select New, or press Ctrl+N. The new presentation dialog box opens. Blank presentation is selected by default. Click Create button. A new blank presentation will be created. Okay, now we have to do a practical of creating a new blank presentation. Click on New. Now here it is, blank presentation. While I have clicked on blank presentation, the first slide always comes with a title and a subtitle. Next topic is templates. A template is a file that contains predefined settings on which a user can base new presentations. Templates are easy to use. They also save much time in beautifying the slides. अच्छा, टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट के अंदर बेसिकली टेम्पलेट जब हम यूज़ करते हैं, टेम्पलेट के अंदर प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, कुछ इस तरह की सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर जो
हमारे टाइम को सेव करती हैं, टाइम को इस तरह से सेव करती है कि हमें उसको और चीज़ें उसके अंदर और एनिमेशंस या और कलर्स वगैरह कलर स्कीम डिसाइड करने के अंदर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। उसके अंदर से पहले से ही इस तरह की सेटिंग्स हुई होती हैं कि वो उसकी जो लुक है वो हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छी इफेक्ट करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स। इंस्टॉल टेम्पलेट्स, the templates are providing with the PowerPoint. My templates, template that a user has to create and save. Office online templates, template that a user download from Office website. Using install templates. Okay, install templates ये PowerPoint के अंदर प्री डिफाइंड होती हैं। माई टेम्पलेट्स ये यूज़र ने, ये टेम्पलेट्स वो होते हैं जो यूज़र ने खुद क्रिएट किए होते हैं और उसको सेव किए होते हैं। ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट्स ये इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं, इनको हम सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर से। यूजिंग इंस्टॉल टेम्पलेट्स, नाउ दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग द इंस्टॉल टेम्पलेट्स। Open PowerPoint, choose Office button, select new, the new presentation dialog box open. In the template list, click install templates. Okay, click a template to save a preview of it. Click create button. Okay, now we are going to perform a practical of it, of how to use a template. Go to file, open, go to new. There you can see these all are the templates. Now we can select any of one of them. For example, I am going to use the orange burst or scientific discovery. I am going to use the scientific discovery template. I have clicked on it. I am going to, now we can view it. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह की लग रही है प्रीव्यूज़ का। अब इस क्रिएट, नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन अ क्रिएट बटन वी आर गोइंग टू यूज़ इट। आई हैव, नाउ वी आर डाउनलोडिंग दिस टेम्पलेट and here it is. As you can see, there are predefined settings. This template have a predefined settings. This template already use this image, this font size, this color scheme. So I hope now you guys know how to use this template. Now the next topic is themes. A user can open a new presentation using a theme. A theme contains predefined settings of fonts, colors, and effects. A user can also customize a theme by making changes in fonts and other settings. Okay, theme क्या होती है basically? Theme भी, अब जब यूज़र एक न्यू प्रेजेंटेशन थीम को यूज़ करते हुए एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। थीम बेसिकली इसके अंदर प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, इसके अंदर फॉन्ट्स, कलर्स और इफेक्ट्स पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। अब यूज़र उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। यूजिंग थीम्स, ओपन PowerPoint, चूज ऑफिस बटन, सेलेक्ट न्यू, द न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन। इन द टेम्पलेट लिस्ट, क्लिक इंस्टॉल थीम्स. Click a theme to see a preview of it. Click create button. A new presentation opens based on the selected theme. Okay. इसका भी प्रोसीजर सेम वैसा ही है जैसे हमने टेम्पलेट्स के लिए यूज़ किया था। न्यू पे गए, यहाँ पे हमारे पास थीम्स शो हो रहे हैं, थीम्स के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑनलाइन थीम्स जितने भी पड़े हुए हैं उसके अंदर से सर्च किए जा रहे हैं। या अब ये सारे हमारे पास थीम्स हैं। अब इसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे, उसका प्रीव्यू आएगा हमारे पास। पहले ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया उसका थीम का। इस क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो वो थीम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब टाइटल ऐड कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली बाकी हमारी स्लाइड्स आ जाएंगी। Collecting contents for presentation. Contents for presentation can be collected in the form of text, images, audio and video clips. The presenter can search books and internet for the best available materials. Suppose a user wants to create a presentation on Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The user should collect the following material to make an attractive presentation. अच्छा, collecting contents for presentation. अब presentation के लिए जो content हमने collect करना होता है वो
हम कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स। अब जो यूज़र कलेक्ट कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए डेटा, वो या तो बुक्स के अंदर सर्च कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकता है। अब सपोज़ करते हैं कि अगर कायदे-आज़म के ऊपर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की जा रही है तो कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे बताया हुआ है। टेक्सचुअल डेटा, इमेजेस ऑफ कायदे-आज़म, साउंड क्लिप्स फ्रॉम हिज स्पीचेस, वीडियो क्लिप्स ऑफ कायदे-आज़म। पहला जो डेटा वो है टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा मीन्स उसकी उनकी बर्थडे, उनकी हिस्ट्रीज, उनकी कोट्स वगैरह। सेकंड जो है कायदे-आज़म से रिलेटेड उनकी कुछ कायदे-आज़म की कुछ इमेजेस। थर्ड वन इज़ उनकी स्पीचेस ताकि वो साउंड भी ऐड किया जा सके। फोर्थ वन इज़ वीडियो क्लिप्स ऑफ कायदे-आज़म, कोई शॉर्ट क्लिप्स कायदे-आज़म की कोई स्पीच के अंदर या कोई इस तरह की कोई वीडियोस हो जाएं। एडिंग बैकग्राउंड फिल इफेक्ट। द बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड इज़ द एरिया बिहाइंड द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। द बैकग्राउंड कलर एंड अपीयरेंस ऑफ अ स्लाइड कैन ईजिली बी मॉडिफाइड विद द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब बैकग्राउंड, स्लाइड का जो बैकग्राउंड होता है वो वाला एरिया होता है बैकग्राउंड जो टेक्स्ट के बिहाइंड होता है। अब बैकग्राउंड कलर और अपीयरेंस जो होती है वो इजीली मॉडिफाई की जा सकती है बाय यूजिंग द फॉलोइंग इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट्स यूज़ करके मॉडिफाई की जा सकती है बैकग्राउंड का कलर और अपीयरेंस? ग्रेडियंट फिल, टेक्सचर फिल और पिक्चर फिल्स। ग्रेडियंट फिल क्या होता है? अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ कलर्स एंड शेड्स, यूजुअली फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर or from one shade to another shade of the same color. अच्छा, ग्रेडियंट फिल क्या होता है? ग्रेडियंट फिल बेसिकली वो होता है कि एक कलर है और उसके शेड्स हैं और वो अब एक कलर दूसरे कलर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो शेड चेंज करा, आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करा, उसको हम ग्रेडियंट फिल कहते हैं। टेक्सचर फिल, द फील ऑफ अ सरफेस और अ फैब्रिक इज कॉल्ड टेक्सचर। There are different textures available in the PowerPoint. Texture fill. The feel of a surface or a fabric is called a texture. There are different textures available in the PowerPoint such as backgrounds. Next one is picture fills. Picture fills. What is picture fills? A visual representation of an object or a scene or person produced on a surface is known as picture. पिक्चर फिल्स का आपको पता है कि पिक्चर्स का तो आपको आइडिया होगा। और पिक्चर फिल्स मीन्स कि बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर प्लेस कर दी जाती है, उसको हम पिक्चर फिल्स कहते हैं। एडिंग ग्रेडियंट फिल। नाउ दिस इज़ अ प्रैक्टिकल ऑफ हाउ टू यूज़ अ ग्रेडियंट फिल इन अ पावरपॉइंट। ओपन पावरपॉइंट, टाइप द फॉलोइंग quotations. As you sow, so shall you reap. On the design tab in the background group, click background dialog box launcher. The format background dialog box appears. Click gradient fill. Okay, that would be much more easier if we will do side by side. What is the quotations that we have to write? As you sow, so shall you reap. Okay, I believe we should open a new blank presentation. That will be much more clear.